दीदी जी सादर प्रणाम। ममता दीदी सादर प्रणाम। रम्मू दीदी सादर प्रणाम। लाइक डन कर दो दीदी। हाँ दीदी जी लाइक मिल गया है। दीदी जी सादर प्रणाम। पता है दीदी आप अपना नाम मत लिखा करो, मैं जान जाती हूँ। मैं सभी दीदी को जान जाती हूँ। रम्मू दीदी की सारी आईडी भी जानती हूँ, ममता दीदी की भी, इंदू दीदी की, सबकी आईडी जानती हूँ दीदी।
जय श्री राधे चौबे भैया, जय श्री राधे। रमो दीदी धन्यवाद, इंदू दीदी धन्यवाद। चौबे भैया आप लाइव में आए हो तो एक लाइक जरूर दे देना भैया जी। आप इतना कीमती समय निकाल कर रोज आते हो, लाइक जरूर दे दिया करो भैया। इंदू दीदी धन्यवाद, रमो दीदी धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, धन्यवाद रमो दीदी धन्यवाद, इंदू दीदी धन्यवाद। रमो दीदी आपका भोजन हो गया? भोजन ना बनाई हो तो बना लो दीदी जी। मिल गया चौबे भैया, आपको लाइक मिल गया। अच्छा अच्छा दीदी भोजन कर रही हैं। मेरे यहाँ तो नीचे अभी ये लोग मना करते हो कि अपना मोबाइल बंद कर दो, तो जब मेरी लाइव का समय आएगा तो और जोर जोर अपना अपना मोबाइल सब लोग चलाना शुरू कर देंगे, इसीलिए म्यूट करके रखी थी। मैं ऊपर आ जाती हूँ, गर्मी में तो ऊपर आ जाती हूँ, ठंडी में क्या करूँगी, राम ही मालिक है। ठंडी आने से पहले अगर सब ठीक हो जाए मैटर तो सबसे बढ़िया है, लाइव वाला मैटर खत्म हो जाए। रमू दीदी धन्यवाद, इंदू दीदी धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद। धन्यवाद सभी दीदियों को धन्यवाद। 8 और 9 लाइक किसने दिया है? कमेंट किसी का नहीं आया और लाइक 2 बढ़ गया है, किसी ने दिया होगा। ममता दीदी धन्यवाद, रम्मो दीदी धन्यवाद, इंदू दीदी धन्यवाद। ममता दीदी ये बताओ, शंभू सिस्टर की लाइव चली थी कि नहीं चली थी आज? धन्यवाद मेरी सभी दीदी को धन्यवाद। चौबे भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप निस्वार्थ भाव से आते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं भैया, दिल से धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मेरी सभी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद, भैया जी को भी धन्यवाद। भैया जी रोज आते हैं, एक लाइक देते हैं, इतना समय देते हैं। जितना धन्यवाद दूं भैया को उतना ही कम है। इंदू दीदी धन्यवाद, ममता दीदी धन्यवाद, चौबे भैया धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। इंदू दीदी जी धन्यवाद, ममता दीदी जी धन्यवाद, रमो दीदी जी धन्यवाद। ठीक है दीदी, ठीक ठीक ठीक। मैं तो पहले ही पूछ ली थी दीदी, रमू दीदी से भी बात की थी कि भोजन ना बना हो तो बना लो दीदी। ठीक है दीदी, ठीक ठीक। मैं तो दीदी आवाज भी बंद कर देती हूँ। मैं मोबाइल ऑन करके रख देती हूँ, आवाज भी बंद करके रख देती हूँ। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। इंदू दीदी जी धन्यवाद, रम्मू दीदी जी धन्यवाद, ममता दीदी जी धन्यवाद। मेरे सास ससुर को आवाज ही नहीं पसंद है पूनम बहन, तो इस वजह से हम भी म्यूट करके ही रखते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है, बंद कर दो दीदी। अरे दीदी आपके तो सास ससुर हैं, मैं अपने पति से ही डरती रहती हूँ कि पता अभी मेरा सब मोबाइल वोबाइल सब छीन लिए थे। तो एक तो मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तीनों मोबाइल छीन के रख लिए थे। तो उसके बाद जब दिए तो 2-4 दिन में गुस्से, इसी वजह से 10-15 दिन लाइव नहीं आई। मीनू बहन बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, आनंद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा सुहागन रहो मेरी प्यारी बहन। नुकसान तो आपका ही हुआ पूनम बहन। हाँ क्या करूं दीदी, लेकिन बड़ा आराम था दीदी, मन एकदम हटा ली थी मैं। मेरे पास मोबाइल नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, रातों दिन सिर्फ अपना खाना बनाना करके सो जाती थी। जितनी थकान थी सब दूर हो गई। अंशिका बहन बहुत बहुत आज कितना समय दिया है पूनम दीदी बता दो। अंशिका बहन जुड़ने जुड़ने के चक्कर में मैं समय नहीं देखी। आपके पास जितना समय हो उतना दे दो बहन, कोई समय का कोई वो नहीं है। आपके पास 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय हो आप दे दो। मैं अपनी किसी बहन को विवश नहीं करती हूँ बहन। अंशिका बहन जितना समय हो उतना समय दे दो बहन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद मीनू बहन। मीनू बहन बिटिया रानी स्वस्थ है इस समय? मौसम में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है इस समय ना, इसीलिए पूछ रही हूँ।
हमारे पास ऑटो क्लीनर वाली सुविधा तो है नहीं, तो इस वजह से हम आपसे ही पूछते हैं तो थोड़ा दोस्तों को। अरे दीदी, मैं कितनी बार बोली हूँ कि आप परेशान मत हुआ करो। रम्मू दीदी, मैं तो रोज यही बात कहती हूँ कि अगर सारी बहनें आपस में कंप्रोमाइज कर लें तो ये ना आँख की दिक्कत हो, ना सर की दिक्कत हो, और सब जो है बस एक दूसरे पर भरोसा ना करके अपनी अपनी आंखें खराब करने लगी हैं बस। और मैं तो बोल देती हूँ, आते जैसे आप लोग आते हैं तुरंत ही बोल देती हूँ, दीदी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप रुक रुक कर भी मत करिए। मैं तो दीदी जाती हूँ आपकी लाइफ में, जाती हूँ मोबाइल ऑन करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। आपकी लाइव 8 बजे खत्म होती है, मोबाइल मेरी कहो 9-10 बजे तक ऐसे पड़ी रह जाए। मुझे भूलने की बीमारी है दीदी। कल मंजू बहन की लाइव 2 बजे खत्म होती है, और जब 2:22 पर मैं मोबाइल उठाई तो लाइव उनकी बंद हो चुकी थी, मेरी मोबाइल ऐसे ऑन पड़ी थी। अच्छा अच्छा बहन, इधर कई दिनों से बात नहीं हो पाई। मैं आज की कल सोच रही थी बात करने के लिए, कई दिनों से बात नहीं हुई थी, लेकिन यही लाइव वाइव के चक्कर में भूल जाती हूँ। अपने मन में जैसे थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ तो हर जगह के लिए सोचती हूँ, उसके बाद फिर भूल जाती हूँ, समय ही नहीं मिलता। राधे राधे उमा बहन, हम भी यही सोच रहे थे पूनम बहन कि सब लोग मिलकर एक एक घंटा सारी आईडी लगा दें तो अभी देखिए कितना वॉच टाइम मिल जाए एक दिन में। हाँ दीदी, मैं दीदी पूरी रात ऑन रखती हूँ। दो मोबाइल तो, एक ये जो है दीदी जिस पे मतलब वो चलता है, ये जो मेरा मेन वाला मोबाइल, ये तो बहुत गर्म हो जाता है। तो मतलब जो कमेंट वाले मोबाइल रहते हैं जिससे कमेंट होता रहता है उस पर कम बल पड़ता है, लेकिन जिस पर लाइव चलती रहती है उस पर ज़्यादा बल पड़ता है, वो बहुत गर्म हो जाता है। तो ये वाला तो मैं बंद करके रख देती हूँ, और जो दो और मोबाइल है उनको मैं चला के रख देती हूँ। हाँ दीदी, वॉच टाइम आराम से मिल जाता है, 3-4 घंटे तो रोज आपको मेरा ही मिल जाता होगा। कभी कभी जैसे मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे स्विच ऑफ हो जाती है, तब मैं सुबह सुबह कभी कभी तीनों लगा देती हूँ, नहीं दो तो रोज लगाती हूँ। और कभी कभी क्या होता है दीदी कि मैं सोच जाती 6 बजे देखती हूँ आपकी लाइफ नहीं चली है, उसके बाद सोचते ला कुछ काम कर लो, उसके बाद काम के चक्कर में भूल जाती हूँ, फिर 7-8 बज जाता है। तब उस दिन आपको बस वही 1 या 2 घंटा 2 घंटा फिर मिल पाता होगा। रमू दीदी, एक चीज आप ये देखी होंगी कि जैसे जब एक दूसरे को सब लोग ज्वाइन करते रहते हैं, एक बार ज्वाइन करो फिर एक बार चेक करने जाओ, इससे वॉच टाइम कम बनता होगा, और जो ऐसे ऑन करके रख देने पे ज्यादा वॉच टाइम मिलता होगा, इसमें उछल कूद तो होता नहीं है।
अंशिका बहन, आप भोजन बना ली क्या? अंशिका बहन, भोजन ना बना हो तो बना लो। क्या बोल रहे हैं आराध भैया हमारे? मौसी आप नहीं दीदी, म्यूट नहीं करती हूँ। म्यूट नहीं करती हूँ, सिर्फ आवाज धीमी कर देती हूँ। अच्छा, अपनी लाइव जब चलाती हूँ? अरे क्या करूँ दीदी, अभी तो जब तक नीचे थी तब तक म्यूटे तो की थी। अपना वाला जब बंद, लेकिन रात में जब मैं चलाती हूँ तो ऐसे चला के रख देती हूँ, कोई आवाज तो जाती नहीं है। अंशिका बहन, आपका भोजन न बना हो तो बना लो बहन। मैं दीदी ऑटो क्लिकर बहुत सीखने की कोशिश की, लेकिन नहीं सीख पा रही हूँ। ऑटो क्लिकर सीख ले तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा दीदी। अच्छा, पूरी रात ऑन करके ना रखा करूँ? दीदी, रमो दीदी फिर से बताइए, मैं समझी नहीं। कि जो पूरी रात ऑन करके रख देती हूँ ये ना किया करूँ क्या? रमो दीदी फिर से कमेंट करके बताइए। आवाज तो मैं नहीं म्यूट नहीं करती हूँ दीदी, रात में ऐसे आवाज खुल के ही रखती हूँ। मौसी, पानी में डाल कर रख दिया करो, जब गर्म पड़ जाए मोबाइल। आप सही कह रहे हैं सुनो बहन। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम करता है। हाँ 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 दीदी, ज्वाइनिंग में वॉच टाइम कटता है। देखिए, आप पहले ही दिन जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में की थी तो मैं आपसे बोली थी ना कि दीदी आप जो है बंद ना करिए, आप ऑन करके रख दीजिए। तो उस दिन आपको अच्छा रिस्पांस मिला, तब आप फिर उसके बाद फिर आप रोज करने लगे हैं। देखो, आप खुद ही जो है आप देखती हैं कि शाम की अपेक्षा सुबह आपको ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब जैसे मेरी लाइफ में ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन जितने भी लोग आते हैं सब रोज वाले हैं, हमको अच्छा वॉच टाइम मिलता है। आई थी 8:35 पर जा रही हूँ। ठीक ठीक दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी। सादर प्रणाम दीदी जी। क्या नहीं चलता है दीदी?
अच्छा अच्छा, रमो दीदी कह रहे हैं मेरे फ़ोन में नहीं चलता है। अच्छा दीदी, अच्छा बना लीजिए दीदी रोटी। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं ऐसे छोटी-मोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देती। कोई बात नहीं दीदी। अच्छा दीदी, ये जो पूरी रात ऑन रहता है, ये बात बोल रही हैं? हमने कई लोगों का सुना है जो रात भर ऑन करके रख दिए थे, उनका चैनल बंद हो गया। अच्छा अच्छा दीदी, चलो ठीक है, आज से फिर नहीं रखूंगी। मेरा भी दीदी बंदे तो रहता है, समझ लो। इसमें जो व्यूजे नहीं आ रहे, 50 व्यूज भी नहीं आ पा रहे हैं। चलो ठीक है दीदी, आज से नहीं रखूंगी। इंदु दीदी, आपका जो है वो हुआ कि नहीं हुआ, मेन वाला मोनो? जब हमें पता चल गया पूनम बहन, तब हम नहीं रखते हैं ऑन करके फोन अपना। अच्छा अच्छा दीदी। चलो ठीक है, नहीं रखूंगी दीदी। अच्छा अच्छा दीदी। पहले मैं खुद ही दीदी 4-5 तो मेरी ही हो जाती थी। 4-5 क्या, उस टाइम 2 ही 3 थे। ये 3 मोबाइल तो अब खाली हुए हैं। जब से 3 मोबाइल हुए, तब से मैं शाम वाली लाइव में आपके जाती ही नहीं हूँ। आज से दीदी 12 बजे तक करूंगी, उसके बाद फिर बंद कर दिया करूंगी। ऐसा मुझे भी नहीं पता था बहन, मैं भी तो रात में ऑन करके रख देता हूँ। अच्छा अच्छा दीदी। इंदु दीदी, आपका मेन वाला मोनो हुआ कि अभी नहीं हुआ? चलो कल आपकी लाइव में आके पूछ लूंगी। अच्छा अच्छा, अरे दीदी, जब वॉच टाइम कटने लगता है तो मेरा तो भैया सर दर्द करने लगता है। जब वॉच टाइम कटता है तो मेरा सर, आँख, पूरी शरीर मेरी दर्द करने लगती है टेंशन से। बहुत दुःख होता है कि इतना मेहनत करके बनाई, और बताओ एक झटके में सब कट गया। दीदी, मेरा ना कटा होता तो मेरा खुद हाफ मोनो अब तक हो गया होता। अरे 500 घंटे मेरा 2200 हुआ था, 26 फिर हो गया, 400 जुड़ गया। अब तक 32-33 मेरा भी हो गया होता दीदी। 31-32 होता मेरा।
अच्छा दीदी, इंदू दीदी, रम्मो दीदी, दोनों दीदी एक चीज़ और बताओ, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे लाइव को प्राइवेट कर दो, तो उसकी वॉच टाइम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दीदी आवाज़ से 12 बजे तक ऑन रखूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। 12 बजे तक में 4 घंटे का समय मिल जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक, ठीक। बल्कि और समय निकाल के 2 टाइम कर लूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। अरे दीदी, आप काहे रोटी छोड़ के आई हो? मैं तो बोली थी ना कि आप, मैं सोची कि आप बना के तब बात कर रही हो। ऐसे आप बीच-बीच में ना छोड़ा करो दीदी। आप खाना बना लिया करो अपना पहले, घर का काम कर लिया करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मीनू बहन लाइव में हो कि चली गई? मेरी एक बहन जुड़ी थी और मैं आप सबसे बात करने लगी, वो चली गई। हाँ दीदी, यही तो। राधे राधे इंदौरी दी। माया लोकगीत, लोकप्रिय गीत। माया लोकप्रिय गीत। दीदी सादर प्रणाम दीदी जी, आपका स्वागत है मेरी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आप मेरी लाइव में आई। लाइक डन कर दो दीदी जी, इंदौरी दीदी। माया दीदी, ये इंदौरी दी का मतलब नहीं समझी मैं। राधे राधे इंदौरी दी। माया दीदी लाइक डन कर दो। हाँ, 2 टाइम। ठीक है दीदी, ठीक, ठीक, ठीक। धन्यवाद ममता दीदी, धन्यवाद। दीदी मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि दिखने वाली बात, ये तो पता है मुझे। मैं भी 1-2 दिन में प्राइवेट कर देती हूँ। वही पूछ रही हूँ, प्राइवेट करने से वॉच टाइम जुड़ेगा कि कटेगा? लाइव प्राइवेट करने वाली बात बोल रही हूँ। जो वॉच टाइम मिला रहेगा, ऐसा तो नहीं प्राइवेट कर देने पर वो ना जुड़े। प्राइवेट ही हो जाए। प्राइवेट करने से ना वॉच टाइम जुड़ता है, ना ना कटता है। बस टाइम मिलेंगे। अच्छा, तो हो सकता है मैं प्राइवेट कर दी हूँ, वही तो नहीं कट गया? जो लाइव आप प्राइवेट किए रहेंगे, उसको बस टाइम आपको नहीं मिलेंगे, और बाकी और कोई कटेगा नहीं।
अच्छा, ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ दीदी कि मैं जो है जैसे 5 दिन जैसे आज की जो आज का वॉच टाइम है वो 5 दिन बाद दिखता है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, कहाँ थे मेरे प्यारे भाई। लाइक कर दिया है मेरी प्यारी बड़ी दीदी। मैं कई दिनों से आपकी याद कर रही थी भैया, कहाँ थे अभी तक। मैं खुद ही गायब हो गई थी तो मैं आपको क्या बोलूं। हाँ तो रम्मो दीदी क्या हुआ जो है, मैं प्राइवेट करती थी और मेरा 3-4 दिन वॉच टाइम नहीं जुड़ा। अब मैं बहुत परेशान थी कि मैं मतलब मुझे इतना वॉच टाइम मिला लेकिन ये काहे नहीं जुड़ रहा है। वही जो मेरा मैं जो वीडियो डाली थी उससे से जो एक एक घंटे मिला था, 1 घंटे आधे घंटे 2 घंटे वही जुड़ता था। तब मेरे दिमाग में तो एक दिन मैं एक वीडियो पब्लिक करती, अभी इस टाइम जब 15 दिन में नहीं की थी तो उसका मुझे एक दिन अचानक से 40 घंटे का वॉच टाइम जुड़ा। तो मैं सोची कि इस टाइम मेरी वीडियो पे व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, कैसे मुझे मिला, ये कैसे मिला, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन की हूँ। अजय भैया बोल रहे हैं, रमो दीदी राधे राधे। दीदी जी, दीदी जी बोल रही हैं, अजय भैया राम राम। दीदी मैं पहले प्रैक्टिकल की हूँ उसके बाद है आपसे पूछी हूँ। तो अब मैं जो है अभी लाइव बंद करने के बाद अपना जितना मैं की हूँ सब पूरा पब्लिक कर दूंगी आज। अच्छा दीदी एक चीज और ये बताइए, लाइव का वॉच टाइम जुड़ा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक 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 भैया, दे रही हूँ दे रही हूँ भैया। दे दी हूँ अजय भैया, दे दी हूँ। मैं कई दिनों से आपकी याद कर रही थी भैया, आज ना आप ना मेरे चैनल पर आ रहे थे। इस टाइम इतना गाना डाली, राधे राधे भी बोलने आप नहीं आए। मैं सोची भैया कोई वो कमेंट नहीं आ रहा है। वीडियो पर जब व्यूज नहीं आ रहे हैं तो वीडियो पर कैसे वॉच टाइम आपका मिल पाएगा, ये हमको पाएगा। लाइव का वॉच टाइम जोड़ा होगा। हाँ भैया वही तो मैं बता रही हूँ, यही बता रही हूँ कि एक दिन मैं मतलब इसी वजह से तो मुझे पता चला। मैं अपना सब प्राइवेट कर दी थी और मुझे 4-5 दिन मतलब उस टाइम में से रात रात भर की थी, मुझे अच्छा वॉच टाइम मिला। और उसके बाद में प्राइवेट कर दी तो मेरा जब 5 दिन में मतलब जो जुड़ता है उस दिन की मैं डेट देखी तो मुझे वॉच टाइम मिली ही नहीं थी, क्योंकि आजकल व्यूज आ नहीं रहे हैं। और फिर एक दिन मैं अचानक से इस टाइम में लाइव कर नहीं रही थी, एक दिन एक वीडियो मैं पब्लिक कर दी। और जब पब्लिक की उसके 5 दिन बाद मुझे 40 घंटे मिले। जब 40 घंटे मिले तो मैं कंफ्यूज थी कि जब मेरे वीडियो में व्यूज आ ही नहीं रहे थे 40 घंटे मिले कहाँ से। तब मेरा दिमाग वही काम किया कि हो सकता है जो मेरा वॉच टाइम कटा है, मैं जो वीडियो सब प्राइवेट कर दी हूँ सारी लाइव, वही न कट गया हो। अपने मन में ये बात पहले सोच विचार कर रही थी, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ दीदी। कई दिनों से सोच रही हूँ कि जितनी वीडियो प्राइवेट की हूँ मतलब वो वीडियो क्या सॉरी जितनी लाइव प्राइवेट की हूँ सबको पब्लिक कर दूं। दीदी जी बोल रही हैं सब बढ़िया है भैया जी। हाँ भैया मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, कुशल मंगल हूँ। बीच में थोड़ा दिक्कत थी। रमो दीदी जो मेरे कान में बता रही थी बहुत भारी भारी सा अजीब अजीब सा लग रहा है। अब सब एकदम ठीक हो गया दीदी।
ममता दीदी थैंक यू ममता दीदी, रम्मू दीदी थैंक यू, अजय भैया थैंक यू। अजय भैया बोलते हैं दीदी थैंक यू की क्या बात है, थैंक यू ना बोला करो। रम्मू दीदी मैं भी आपकी लाइव में नहीं आ रही हूँ, इस समय मेरे यहाँ डिलीवरी। रम्मो दीदी उमा बहन बोल रही हैं कि दीदी मैं आपकी लाइव में नहीं आ पा रही हूँ, इनको भांजा हुआ है। तो पहले भांजे को मतलब पहले वहाँ हॉस्पिटल में थी, उसको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, आईसीयू में था। फिर ये जो आजकल हड़ताल चल रही है तो उसको फिर लेकर गांव आ गई हैं, घर में अपना लालन पालन कर रही हैं। इसी वजह से जो है समय नहीं निकाल, मेरी लाइफ में नहीं आ पा रही हैं आजकल। अभी तक जब मैं वीडियो डालती थी सबसे पहले यही बात करती थी, सबसे पहले इनका कमेंट आता था। आजकल तो 8-8 दिन की वीडियो नहीं देखी हैं, किसी किसी दिन आ जाता है 4-5 कमेंट। अब दीदी आजकल के बच्चे इतना कंप्यूटर माइंड पैदा हो रहे हैं, वो जो है उसको शुरू से जब से पैदा हुआ यही ली है। उसको अगर वो मतलब जो इनका भांजा है उसकी मम्मी लेंगे पापा लेंगे, सबके पास रोता रहेगा, और ये जाके उसको ले लेंगी तुरंत चुप हो जाएगा। आजकल 4-5 दिन के बच्चे, 8 दिन 10 दिन के बच्चे भी इतना सब जानकार हो गए हैं। पहले हम लोगों के बचपन में दीदी 1.25 महीने तक बच्चे ऐसे सोते रहते थे, कौन लिया है कौन नहीं लिया कुछ नहीं पता रहता था। ये 3-4 महीने 5-6 महीने के बाद सबको पहचानते थे। अब आजकल बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि तुरंत से सबको पहचान रहे हैं। आजकल क्या मैटर है दीदी, शरीर कमजोर होता जा रहा है, दिमाग तेज। मीनू बहन लाइव में हो कि नहीं हो, अगर हो तो कमेंट करके एक बार बता दो। बहुत खराब आदत लगा के रखी हो। जब अपने घर जाएगा तो बहुत परेशान करेगा। अभी भी छोटा, अभी भी उससे दूरी बनाओ, नहीं उसको तो परेशानी होगी ही, तुमको भी परेशानी होगी।
कोनो जादू टोना करे हो बुओ के ऊपर। काम वाम करत हो कि नहीं? नहीं तो लड़का के बहाने काम करे के मारा ओका परचाए लेहे हुआ कि हम तो भाई लड़का लेहे ही कैसे काम करी। आराम से लड़का लेके बैठ जाओ करा, सास तुम से कहते ओकरा काम करा करे। कहाँ है मम्मी? यहाँ कि नहीं अगल बगल? अब कल मम्मी से फोन करब तो बताओ कि मम्मी यही बिरो का परचाए यहाँ है। चला अभी तो छोटा है, धीरे 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 लेकिन उससे दूरी बनावा, नहीं आगे दिक्कत हुई। अरे हम सोचे शायद तू लड़का लेके बैठ जात हुआ, सासू माँ से काम करावत हुआ। तब तो कहीं कल मम्मी से बात करबे कि मम्मी ये लड़का लेके बैठ जात हुई है। ऐसे हंसी वाली बात करते रहे, जानता ही काम तो करेंगे पड़ी घर में जो सौरी पड़ी है। दीदी आप परेशान ना हो, इतना कमेंट ना लगातार करा करें। चलो ठीक। सादर प्रणाम दीदी जी। दीदी जी सादर प्रणाम। आपकी लाइफ का समय हो गया होगा ना दीदी? अच्छा 9 बज रहा है। रमो दीदी सादर प्रणाम, ममता दीदी धन्यवाद। ममता दीदी आपका काम हो गया खाना बनाना? ममता दीदी आप खाना खा ली? मैं खुद ही
सोचती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी समझें, नहीं तो अपने घर जाएंगे तो अच्छे के बारे में नहीं सुनेंगे। हम्म। चल ठीक है, थोड़ा आराम हो जाए ना पेट ओट में, टाका वाका स्वस्थ हो जाए तो का सबके लगे ओका जो है रखा करा तो ओके सबके लगे रहे वाली आदत है। ज्यादा कनिया ना लेवा करा, नहीं इनके क्या अकेले यहाँ बहुत दिक्कत हुई। अभी सबको खाना परस। अच्छा अच्छा दीदी, ठीक है दीदी, आप सबको परस खिला दो, परेशान मत होइए। ममता दीदी आप परेशान मत होइए, सबको परसों खिलाओ। आप भी खाना खा लो आराम से। छह महीना तक गदेले का 18 घंटा सो, 6 महीना का 2-3 साल तक गदेलन बड़े 18 घंटा सो बहुत जरूरी रहा है। आजकल लड़कियां तो बहुत जागत वागत रहा थी लाइट वाइट की वजह से। बाकी 18 घंटा सो कंपलसरी है लड़कियों की वजह। अरे दीदी थैंक यू का बात ही है। रोना ज्यादा आता है बच्चे। चलो ठीक है, धीरे धीरे सब बने लगी। अरे अबे का ठंडी के सीजन में और परेशानी होत है।
रोजे नाक चुआ करत है, कतो खांसत है, कतो छींकत है। कहीं सर्दी आ, कहीं जुकाम आ, कहीं पसली पसली चलने लगा था छोटे बच्चन का। चल ठीक है। सब धीरे धीरे बने लगी। हमहू तो लापरवाह केयरलेस, यही का करी, कोनो तरह गुजारा हो जाता है।
थैंक यू ममता बहन, थैंक यू। आज शायद आराम है। दवाई कुछ लेहन कि नहीं लेहन हमरे समझ में कल 500 का नोट लेहे टहरत रहे नहीं नान। फिर अपने उससे दवाई पूछे नहीं लेहन कि नहीं लेहन। बताई ना आजकल ये सब लंच में नहीं होते। और सुबह सुबह जो है 7:30 8 बजे निकल जाती। हमारा पूरा दिन बेकार हो जाता। हम इनका सबका 2 बजे तक इंतजार करी थी, बिना खाए पिए पड़ी रही थी। फिर हमें बड़ी गुस्सा लागत है कि हम ऐसे बिना खाए पिए पड़ी यही 2 बजे तक। फिर कहीं अरे खाना खाए ला हम आज ना पाओ, बहुत काम है, जिम्मेदारी है, फलाना है, धमाका है। फिर शाम का, जब शाम का सब आवत थी तब फिर हमारा लाइफ शुरू हो जाते है। तो हमारी मुलाकात नहीं हो पावत। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जैसे कि वो अकेले हैं इसलिए मैं। हाँ, नहीं बुराई की बात नहीं है, दिक्कत होगी भाई, सास नंद नहीं है तो बच्चा भी देखना पड़ेगा और घर का जो काम है वो भी करना पड़ेगा। बुराई की बात नहीं है। ठीक है दीदी, ठीक 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 दीदी। सादर प्रणाम दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ठीक है दीदी, ममता दीदी। अच्छा आप हमारो बुराई करे लागू। चला ठीक है, जे जैसे रहा तो वही तरह गुजारा हो जाए, सब भगवान पूरा करत हैं। बिट्टी हम जाते हैं देख नीचे से खाना लावे। अगर केहू आवे तो उससे कमेंट करके बात करत रही, अच्छा। खाना लेके हम तुरंत ही आ जावे। खाना पूरा ठंडा होइगा हुई।
हमको लगता है बारिश हुई।
राधे राधे बहन, राधे राधे। हम नीचे आके ही भोजन करें। ये लोग अपना मोबाइल बंद नहीं करते, मोबाइल चला कर रखे रात में, फिर म्यूट करे पड़ जाते।
क्या हुआ दीदी, क्या कह रही हैं? अरे मैं नीचे खाना खाने आई हूँ ना। मैं ऊपर चली गई थी अभी तक ना, अब खाना खाने आई हूँ। अभी तक सब लोग जुड़े थे तो सबसे बातें करना था। जब सब लोग चले गए तो मैं सोची चलो भोजन कर लूँ थोड़ी देर। थैंक यू संतरा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, लाइव में आई। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, दिल से धन्यवाद।
तिवारी पूर्वा में अपने अपने तिवारी पूर्वा में आज अपने तिवारी पूर्वा के एक और वट वृक्ष गिर गया। महारथी टाटा टाटा दो महारथी हाँ वट वृक्ष बहुत सही। टाटा नाम कमलापुर ग्रुप में आएगा कि दादाजी को श्री चरणों में स्थान दे। कास्ट पाठी गोलू भाई हमारे तमाम भाई फिर लिखे आवा तो दूसरे तीसरे स्थान पर वो है। हम लिखे श्री नारायण श्री हरि नारायण दादाजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। घर से बहुत दूर है ना। हाँ हाँ पूजा पाठ तो कर दें। हाँ पूजा पाठ तो बहुत दूर है। अचानक बेचारे बीमार पड़े अचानक है। बहुत सुंदर है। सुंदर लोगों को भगवान को कभी वाकई बहुत सुंदर है। वाकई बहुत सुंदर है। ये पलाता नहीं मुन्ना नहीं ज्यादा सुंदर दो तो मुन्नो है वो रहा शकल बनाओ फिर चेहरा बनाओ तो सुंदर है। हाँ बढ़ल मतलब हाँ नाम कल्लू रहा लेकिन कल्लू नहीं रहा। दुलार लोग के कल्लू नाम गोद रहे थे। कल्लू नाम भले रहा है। कल्लू उनका जो है काका दादा कल्लू भाई भाई इनके जो नहीं तो कल्लू भाई का काम चाचा जी का नाम है राजीव। ए भैया उनके मेहरारू संतोष के तसैनो भाई जलवा है माने पड़ी ना टटैनी को जलवा है जलवा ड्राइवर बता दी। संतोषी माता कीर्तन रही हाँ तो बबलू मेहरारू संतोष मेहरारू बोल रही ना तो दीदी ऐसी तो उससे बहुत बड़ी है दीदी आप तो देवरानी है का आप इनसे तो ये तो आप बहुत बड़ी हैं आप इनसे कब होती हैं पता नहीं कि हमारी चाची है की रहने तो आराम गोड़ फैला गोड़ धरावत है वो जैसे
बिटिया से भरा की हो भरा तो उनके पैर छुए थे संतोष के मेहरारू बबलू की संतोष है बबलू मेरा वो अपने बुआ भतीजी वाले पे समझियो बुआ भतीजी नंद वाली बात नंद नहीं बिटिया लागे थे इनके बाप के बुआ हाँ हाँ अरे फिर मैं यहो तो सिस्टम ना नहीं देखा इसलिए कुछ आदमी वो थी ना उनके छू होती ना उनके छू होती देखा जैसे कविता के साथ कविता ना किया हाँ? हमारे उनके साथ जो है तो हम उनके साथ तो हमारे माइक जो नहीं धरवाए हमारे चाची से धराओ तो जैसे उम्र देवी थोड़े जो थोड़े ज़्यादा बिया पे गए हैं तो उम्र देवी उनको वोट मिल गए तो या वोट मिल गया नहीं हुआ था उम्र देवी और थोड़े कुत्ती भाई इनके साथ जोड़ियां हैं दामाद है कि नहीं भैया तो दौड़ जाए तो वो पड़ गया आए तो दमादे तो आए कौन मुझे वहां तो बात वो पत्तीदार चला जाए जो नाता आपका कर दिया बताओ नहीं तो वही चीज है तो उन दोनों मतलब कि वो हमारे मतलब माई की बुआ के नंदी बेटियां हैं चलता था जब हमारे मम्मी की बुआ की नंद बेटियां हैं कविता के हैं चलता था जो नहीं अरे कविता के हैं इनको के माई वो हमारे माई के बुआ के नंदी बेटियां थी लेकिन वो जो ना है महिमा तो उनका आज ही कही तो बिगड़ा है उनका मौखी कहा है कविता ही थे मर गई कविता के हैं सभी बात कविता के आर्य आनंद मौखी आर्या आर्यन तो बहुत ही मस्ती है वो हाँ आर्या आर्यन तो बहुत ही मस्ती है अरे तो कि अरे आराध्य और आराध्या को बहुत ही मस्ती है जब टक्कर दे रहे हैं कि आज भी बच्चा पढ़े इनके लगा लेकिन नहीं जानता था एक अंतर होता है ऐसा लगा कि बच्चा पढ़ा आर्या सुना वैसे आर्या आर्यन के मौखिया करता जो की चीज बने वही चीज बने मतलब कि जैसे आराध्य और आर्या के मौखिया जो ने चीज करता थी वही चीज बने आर्या और आर्यन के मौखी करता थी अच्छा हाँ उल्टा समझ लिया ऐसा समझ गए तो बेचारे आए सुदिन देख के पूजा घंटी बजाए के तो मेहरारू लगे जाती महीना में 2 दिन तो बतावा हमका यार अमावस पूर्णवासी अमावा पूर्णवासी जबकि जाए ना चाहिए अरे वो है मतलब महीना में 2 दिन 5 दिन देखा थी कि कब मेल मिलाप का समय है 17 के हिसाब से हाँ तो हम बताओ तो अमावस्या पूर्णमासी अमावस्या पूर्णमासी चतुर्दशी परिवार एकादशी ये तीन चीज सोना चिड़ैया सोन चिड़ैया को नहीं छूना चाहिए और दोनों संक्रांति अब कब लेक चाहिए पहले बताने को उनका सुना तो बताओ दही ना दोनों संक्रांति और शुक्रांत अरे अरे वो अरे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अच्छा रजस्वलम न लेक चाहिए तो लेक कब चाहिए पहले बताना हमारे तो बेचारे वो हमका लागत है बेचारे अपने कर्म का इस जन्म के लिए तो बेचारे इनका हमसे तो मंगवा ली सीधा झगोला बोला है इनका इसे पहनाए ना बात बताइए उनसे हम गला घोट दे कोनो दिन हमार मुर्गा जी को
नहीं केहू को घारे बांट दिया तो लाइक दे गए जादू नजर हम पाए के तिवारी कौनो जुगाड़ बतावा इनका हम दे दी केहू को घारे ला पे एक उसको लग गया आज ज्यादा देर में चलाओ तो पूरे संसार की व्यू बनाई है सब वही जो हमारे व्यू बनाए थे का कहीं तो सुविधा हो आवा चलावा रुका ना रात में बुजुर्गों नहीं तो पानी बरसता है हाँ का करा बुजुर्ग पानी बरसता है तुहार यहाँ एक बहन यहाँ वो तो कुछ कही नहीं पावत यहाँ तुम मार मत तुम सुनानी यहाँ कौन मोबाइल में ऐसे बोल दो अगर तिवारी तबीयत कैसे आती है तुम्हारी तबियत इनकी सारी नसें जो है ना मोटी हुई है उस ललित तिवारी की हफ्ता 10 70 चौराहे पर आते भी पते अरे नहीं तू तो ही अब भाई तुहार बना नहीं निकला अरे उसे आओ वाली तबीयत को तो खाना पानी थे आज खाना वाना खवा के लिए सवेरे से तो कुछ खाए नहीं है भैया ये सब कहाँ चना मूंगिया ला आवाज दूर के पीछे में कोई सा देखा बड़े देखो तो सारी तबियत सही हो जाए अगर हमारे तरह में जीजा होते ना तो इसको पानी ना होती बहुत बहुत धन्यवाद बहन तो क्षत्रिय हथियार बहुत बहुत धन्यवाद बहन धन्यवाद काजल बहन थैंक यू काजल बहन काम न खत्म हो तो ऑन करके रख दो
काजल बहन आप लाइव में हो ना? पूछ रही हूँ बहन। अभी काम ना फिनिश हुआ हो तो काम करो बहन, भोजन बना लो, खा लो, बच्चों को खिला दो। हमको लगता है बहन आवाज म्यूट की है। काजल बहन आवाज म्यूट की हो क्या?
उमा, अगर मोबाइल चार्ज हो तो लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। उमा, अगर मोबाइल चार्ज हो तो लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। उमा, अगर मोबाइल चार्ज हो तो लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। उमा, अगर मोबाइल चार्ज हो तो लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। उमा, अगर मोबाइल चार्ज हो तो लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। लगा रहने दो, अभी मैं बंद कर दूंगी 12-1 बजे तक। की होगी, कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा छोड़ दीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए निशा मामी। गुस्सा होगी तब तो छोड़ेगी। प्लीज लाइक कर दी हूँ बहन। मैं गुस्सा नहीं हूँ दीपक बाबू, हाँ वही तो बोल रहे हैं, गुस्सा है ही नहीं। छोड़े छोड़े कौन से पार्टी। हेलो पूनम दीदी, कैसी हैं? आपका वेलकम है लाइव में। आप कैसी हैं? और आप लोग के पास तो पता नहीं कमेंट जा नहीं रहा है। खाना खा ली है निशा मामी? बहन मेरी लाइव चल रही है, मैं आपकी लाइव देखी तो लाइव देने वाली थी। गुड़िया बहन आप भी आ जाया करो, आप जिस मेरी लाइव करती हैं। बहन मेरी लाइव चल रही है, मैं आप लोग को एक लाइव देने आई थी बहन।
गुड़िया बहन बंद कर दी क्या आपने लाइव? गुड़िया बहन लाइव बंद कर दी क्या आपने? गुड़िया बहन बंद कर दी क्या आपने लाइव? गुड़िया बहन बंद कर दी क्या आपने लाइव? गुड़िया बहन लाइव बंद कर दी क्या आपने? गुड़िया बहन बंद कर दी क्या आपने लाइव? गुड़िया बहन बंद कर दी क्या आपने लाइव?